Hi everyone, warmly welcome to all of you with another important video, and you can just see an important question on the screen: how to get Saudi Aramco cybersecurity certificate and Aramco vendor code. So I can claim it's kind of a most frequently asked question, and since either you are a small company or medium level, or you are a global brand, multinational in other words, your efforts are just to be in Saudi Aramco network, and Saudi Aramco, one of the richest oil and gas brand in the world, so they have their certain criteria to meet with. And for this reason, I'm recording this video in two languages like English, the first part, and the second part would be in Urdu, the same video, just for broader understanding. Uh, our audience, listening and watching in more than 60 different countries. So either you are operating in your business in Saudi Arabia, or you are operating from another country. In both way, how to get cybersecurity certificate and Aramco vendor code, you will get comprehensive, inshallah, insights and knowledge through this video. Now, first of all, bear in mind why we need Saudi Aramco cybersecurity certificate. So basically, it's kind of a prerequisite requirement. In other words, zero tolerance policy against cybersecurity crimes and all that. So Saudi Aramco wants all their contractors or the upcoming contractors wishing to work in Saudi Aramco network. They really want them to be certified, like their cybersecurity system must be certified through the auditing firms of Saudi Aramco. And the auditing firms, of course, they will not issue the certificate until you meet certain criteria. And for this area, our IT consulting or our IT experts, they are providing services, especially to prepare, especially first of all, to implement Saudi Aramco cybersecurity standards within your company in cooperation of your IT department. And once things are done, our IT team will definitely prepare a comprehensive report just to submit Aramco pro auditing firms, and then the auditors, they have right to evaluate the compliance as per Aramco guidelines. And once the report is accepted, Saudi Aramco auditing firm will issue the cybersecurity certificate for your business, for your company. And once this certificate is available, now either you want to, you wish to have Saudi Aramco vendor code, you are good to go. If you already have Saudi Aramco vendor code, but you want direct contract or you want to go direct bidding in Saudi Aramco, still this certificate will be asked in the system. So separated by, in other words. So definitely this certificate still will be helpful. And most importantly, since the cyber crimes are booming up, technology is evolving everywhere. So in that context, we all are becoming screen addicted. So in that context, of course, it will be helpful once you comply all Saudi Aramco cybersecurity standard requirements. That would also secure your business data, and it will be helping a lot to your business. And once you have cybersecurity certificate along with vendor code, which means now you are in a network of global players. And yes, if your company have some sort of work services or products which can be beneficial for Saudi Aramco, of course you can start offering and going for bidding. Of course, that's another area where our consultants can help you out. Now, uh, the real question comes for cybersecurity certificate. What is the roadmap? Before we discuss Aramco vendor code kind of requirements, what type of documents required, or we really need to understand the roadmap map of this cybersecurity. So, roadmap to cybersecurity compliance certificate. First of all, we will be, if you hire us as your consultant, IT consultant. So our IT experts definitely they will determine
the third party classification, either you are a service provider or you have particular products which you want to sell in Aramco network. And yes, at number two, they will implement the applicable SACS 002 requirements, which is cybersecurity standard requirement, and also they will conduct, the self compliance assessment like a mock audit, or maybe a uh, online, or might be we'll be visiting your office. Especially in this meeting, we really want your IT team to be with us, just to understand where you are today in your cybersecurity system management. And of course, based on that self-compliance assessment, we'll be able to decide the authorized audit firm that would be selected mutually, in cooperation, in consultation with all of you. And once the audit firm is selected, at number five, we'll go for compliance verification initial and submission of issued triple C to Aramco. So our team will be helping, to prepare the complete auditing report, and we will be the one dealing to the auditing team. We will be the one making sure, there is 100% success rate, which means 0% failure chances. Surely your business, your company will definitely get cybersecurity compliance certification. And once you have this certification, then the important question arises here: what would be the cost actually in for this whole roadmap? First of all, the auditing firm fee, the auditing firm, whatever charges they have published, of course, that can be paid directly from your account to that auditing company. If you pay that auditing fee to us and you want us to manage the complete 360-degree cycle of this project, still we have no problem. But what I mean is the auditing fee you can pay directly from your account to the Aramco approved auditing firms. Where we gonna be helping? We'll be preparing, we'll be cooperating with your IT team. Will try to help implementing this SAC 002 requirements within your company. Will prepare auditing report, which is the mandatory requirement. Otherwise, the auditing firm, Ramco approved auditing firm, they will not consider, you know, without this report to your company in their approval process or certification processing. So the cost, approximately, bear in mind that would be like 23,000 to 25,000 real. Like it would be including cybersecurity certification along with Aramco vendor code, all documentation, legal requirements, and some others. We will be guiding you inshallah in detail. And within this video, if you are still watching this video, still you will get some of the insights, what type of documents required to get Aramco approval as a vendor. So let me just share some of the documents which are needed to be approved as a vendor. Number one, surely you must have a valid copy of commercial registration like CR certificate, a valid copy of your industrial license, but this is only for the manufacturers. A valid copy of the SAGIA like certification if applicable, a valid copy of Zakat certificate, value added VAT tax certification, and then general organ like GOSI certification, a valid copy of civil defense license equal to government license, a valid copy of Chamber of Commerce and Industry membership certification, contractor government classification if applicable, service providers only. So that would be like initial requirements from the Saudi government side, which is your responsibility as a company to make sure you have all these legal documents. And other than this, since we are going to apply to get Saudi Aramco vendor code, so of course we required original acknowledgement of Saudi Aramco's like supplier code of conduct. Uh, that document definitely will send you and you can sign it. A letter from the bank which the company is dealing, like stating the type of service, and the bank normally provide to your company a relationship status. A valid company ownership profile be required along with supporting documents. And we need authorized signatory letter like identifying the authorized company employees dealing with Saudi Arabia. And yes, the zero tolerance requirement is the cybersecurity certificate, which means we cannot apply for
Aramco vendor code until you get cybersecurity certificate, where we are helping you again. Small and medium enterprises service providers shall obtain, this Monshar Jadir certification. That's another government, Saudi government department, which is supporting to the small kind of companies. And also bear in mind these are requirements. What I am mentioning here in this video is mostly for the companies already operating in Saudi Arabia, and they are registered within Saudi Arabia legally. And if you are out of Saudi Arabia, then of course you can WhatsApp me, you can email, and we can deal further, like how to get cybersecurity certificate and how to get Aramco vendor. We will guide you if you are out of Saudi Arabia. But if you are within Saudi Arabia, then bear in mind, contact us if you meet all these requirements already, and like especially the government requirements. And rest of the cybersecurity certification and few others, definitely we will be supporting you as a consultant. Now, दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमने रिकॉर्ड की है, पहले जैसे कि इंग्लिश में रिकॉर्ड की है। तो मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि जी सऊदी अरामको साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट हम कैसे लें और क्यों लें, और सऊदी अरामको वेंडर कोड किस तरह लिया जा सकता है। तो इसमें मैं आपको ये पहले बताता चलूँ कि साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के बगैर, जो कि अरामको की रिक्वायरमेंट के मुताबिक गेन करना पड़ता है, इसके बगैर आप अरामको वेंडर कोड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर ऑलरेडी आपके पास अरामको वेंडर कोड है, तो जब आप बिडिंग में जाएँगे या कोई भी आप अरामको में डायरेक्ट प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो अरामको वेंडर कोड होने के बावजूद अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो सिस्टम आपकी वो जो बिडिंग रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब आगे नहीं जाने देगा। सो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो कंपनी है वो साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड हो एज़ पर सऊदी अरामको गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद जो अरामको वेंडर कोड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह गाइड कर रहूँगा। पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के लिए क्या रोड मैप है। पहले नंबर पे देखिए, हम थर्ड पार्टी आपकी क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करेंगे कि आपकी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, या कोई प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाह रहे हैं अरामको नेटवर्क में। उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि कौन सी जो सऊदी अरामको की रिक्वायरमेंट्स हैं SAX.002, इसके अकॉर्डिंगली आपका साइबर सिक्योरिटी का मुकम्मल सिस्टम हम रीस्ट्रक्चर्ड करेंगे आपके आईटी टीम के साथ मिलके। उसके बाद हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे मिलके, और अगर हम सब सैटिस्फाइड हैं तो फिर हम अरामको अप्रूव्ड जो ऑडिटिंग फर्म्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, और उनमें से किसी कंपनी को जिसकी फ़ी आप डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं। उसके बाद हम कंप्लायंस वेरिफिकेशन इनिशियल्स में जा रहे होंगे। अगर जो ऑडिटिंग फर्म है, वो डिटेल में जो ऑडिट रिपोर्ट हमारे कंसल्टेंट तैयार करेंगे। वो जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है, वो बेसिकली क्रक्स है इस सारे प्रोजेक्ट का। तो हमारी जो टीम है, वो साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट को प्रिपेयर करके ऑडिटिंग फर्म को सबमिट करेगी, और उसके बाद आफ्टर द डिटेल एनालिसिस जब वो सैटिस्फाइड हो जाते हैं, तो फिर वो साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। और जो साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है, ये कह लें कि प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आप वेंडर कोड नहीं ले सकते। और अगर ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, तो जैसे मैंने कहा है कि आप फर्दर अपने बिजनेस डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाएंगे। सिस्टम जो है वो लाजमी पूछेगा कि साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट किधर है आपकी कंपनी का। अब चूंकि आपने साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट गेन कर लिया है, तो अब आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें चाहिए होंगे। जैसे आपका वैलिड सीआर, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, सागिया की अगर कोई सर्टिफिकेशन है, उसके बाद ज़कात है या वैट है या घोसी है, या सिविल डिफेंस लाइसेंस है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी रजिस्ट्रेशन है, उसकी मेंबरशिप सर्टिफिकेट। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, और ये इनिशियल गवर्नमेंट के जितनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद सऊदी अरामको रिक्वायरमेंट्स में डेफिनेटली सप्लायर्स कोड ऑफ कंडक्ट आपको एग्री करना पड़ेगा, बिकॉज़ अरामको एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है ऑयल एंड गैस में, वन ऑफ द रिचेस्ट ब्रांड। तो वो उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है कि अगर आपने हमारे साथ काम करना है, तो ये चीज़ें आपको एग्री करनी पड़ेंगी। इसमें अगर आप नो कहेंगे तो आप चले नहीं सकते। सो इस कोड ऑफ कंडक्ट को एग्री करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी लाज़मी चाहिए अरामको वेंडर कोड के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इस सारे प्रोसेस में जो मेन है वो ये है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, और ये आपको उसका एक सैंपल भी नज़र आ रहा होगा। तो हम
یہ جو سائبر سیکورٹی سرٹیفکیٹ ہے یہ جب اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ہماری باقی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو آلموسٹ ہر کمپنی جو بھی سعودی عربیہ میں آپریٹ کر رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ سارا کچھ لے کے بیٹھی ہوتی ہے. تو ہم آپ کو دو طرح کی سپورٹ دے رہے ہوں گے. ایک آپ کو سائبر سیکورٹی سرٹیفکیٹ لے کے دیں گے, دوسرا یہ کہ ارامکو وینڈر کوڈ میں کمپلیٹ سولوشن دے رہے ہوں گے. آپ کو وینڈر کوڈ آپ کی کمپنی کا سعودی ارامکو کے ڈیٹا بیس میں جا کے پوری ڈاکومنٹیشن کر کے دین وی ول اور ہم یہ ارامکو وینڈر کوڈ بھی آپ کی کمپنی کے لیے لے کے دیں گے. تو یہ دو سروسز جو ہیں یا بیئر ان مائنڈ کہ یہ 23,000 سے 25,000 ریال ان لائن ود دا ٹائم فریم, کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ایک ہفتے میں ختم کر سکتے ہیں لیکن کمپنی ڈاکومنٹ دینے میں ڈیلے کرتی ہے. تو پھر جیسے جیسے ٹائم ہم بڑھائیں گے ہم اپنی کاسٹ بڑھا دیں گے بیکاز ٹائم از منی. سو یہ ذہن میں رکھیے گا, اس لیے 23,000 سے 25,000 ریال تک کمپلیٹ پیکیج میں ارامکو جو آڈیٹنگ فرمز ہیں ان کی بھی فی اس میں شامل ہے, جو ہماری کنسلٹنگ فی ہے وہ بھی شامل ہے, اس میں ارامکو وینڈر کوڈ کی فی بھی شامل ہے, اس میں ہماری جو بھی ٹرانسپورٹیشن اور آنے جانے کا جو بھی ہمارے آپریشنل ایکسپینسز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اگر آپ واقعی میں ارامکو نیٹ ورک میں کام کرنا چاہتے ہیں, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ارامکو نیٹ ورک میں انٹر ہونا ہی آپ کی برانڈ ویلیو بڑھا دیتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے گی, اور اگر آپ ہماری مطلب اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فردر ہیلپ چاہیے تو اگر آپ کمپنی کے چینل مینیجر ہیں یا کمپنی کے اونر ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں, اور اگر آپ نے کسی مینیجر کو ڈیسیژن میکر بنایا ہوا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ای میل کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ٹائم ویسٹرس کو میں I always try to avoid. تو پلیز اگر آپ ٹائم ویسٹرز ہیں تو پلیز avoid contact me. So nice of you. Thank you very much.